ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਐਂਡ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭੂਮੀ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਕਪੂਰ ਦਾ। भूमि जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी फ़ाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो मदद कर रही है, खाना पीना, उसके अलावा सपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या माहौल क्या है जंतर मंतर के ऊपर। बाहर बैठे हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, कैसा माहौल है। क्या ये जो कल 20 तारीख को जो गड़बड़ हुई है वहाँ पे, वो किसने शुरू की। क्या स्टूडेंट्स ने वहाँ पे ये दंगे शुरू किए या पुलिस ने नाजायज़ ही सब कुछ किया है। So sir, once all of this started on 20th July, जब मार्च थी, तो उस टाइम पीरियड तक there was nothing as serious. Everybody was there, police was there, armed forces were there, students were there. They all were protesting simply. Later on, police was very very cooperative with them. police बस उनसे बात कर रही थी, समझा रही थी उनको चीजें. That was it. Suddenly there comes an order from the government side or whatever it was, जहाँ से भी order आया. They received an order and they started doing lathi charge. They started putting out tear gases. That was just after one call and order. That was it. उससे पहले everything was very cooperative. The armed forces and the police was very cooperative with the students. They were just telling them प्यार से peacefully just leave, रहने दो, government बात कर लेगी, रुक जाते हैं. Everything was normal. But once this started, even our team, our volunteers were a part of the tear charge. They also suffered from it. So they also had that tear gas on their faces, on their body. It kind of went as an infection. So yeah, that was one of the things. But before the police started with all of this, everything was very very peaceful. Yesterday also on 21st July when we went again, we went to give away food. Everything was peaceful. Police was standing there. Police was not doing anything. Students were there. They were protesting for their rights, what they actually went for. सो भूमि जी, जैसे आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल था और पुलिस का और विद्यार्थियों के बीच में कोई टकरार नहीं था. So as you said, you know, some order came and just that lathi charge happened, but after that there has been tension, and of course we are seeing that now youth and apart from the youth, other factions of the society are also coming forward. किसान आ रहे हैं, फौजी आ रहे हैं और ये काफ़िला काफ़ी बढ़ता जा रहा है. तो अब क्या माहौल है वहाँ के ऊपर, वहाँ पर क्या चल रहा है इस समय, और क्या जंतर मंतर के ऊपर ही दिलीप और बाकी जो उनके कॉकरोच पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वहीं पे हैं, और बाकी सियासतदान भी क्या अब आ रहे हैं, क्या माहौल क्या है। Okay, so people were coming till 20th July. जब तक लाठी चार्ज नहीं हुआ था, जब तक टीयर गैस नहीं हुआ था, there were a lot of people from the government, from the ministry side, from the Bollywood side coming. We all saw that on Instagram, on YouTube and everywhere. But for the time being, कल
ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सन नहीं आया कि ओ देयर इज अ सेलिब्रिटी कमिंग, ऐसा कल कोई नहीं आया. इट वाज नॉर्मल जनता ऑफ दिल्ली, ऑफ आउटसाइड दिल्ली, द स्टूडेंट्स standing there and protesting. Apart from which, the farmers thing that you have asked, farmers are on their way to come to Delhi to Jantar Mantar. They were still not there till yesterday, but yes, of course, they are coming, and it is going to get huge. Along with which, the people of Janta Party come and go. They don't stay there for the whole time. It is actually the students who are staying there for the whole time. Okay. And again, as Mr. Sonam Wanchuk was picked up from there, उससे पहले भी आपका जो सचखंड फाउंडेशन है वहाँ पे जाके आप सेवा कर रहे थे, तो थोड़ा सा सचखंड फाउंडेशन के बारे में बताइए. और जो हम वहाँ पे जो रील्स में देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि वहाँ पे हिंदू सिख मुस्लिम सिख सब इकट्ठे होके सेवा कर रहे हैं और कहीं पे भी मज़हब जो है वो आगे नहीं आ रहा और कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं नज़र आ. सो सचखंड फाउंडेशन कैसे इन्वॉल्व हुई इसके अंदर? Okay, so we are working from past 5 years, and we started with the motive of Sarbat da Bhala, to help others. When we started during COVID, in 2020, because people were not able to get food. जिनके घर में COVID था, those people were not able to make food, get food from outside. So we started with during COVID with Langar Seva, providing food at the homes. And उस टाइम पीरियड के बाद से वी हैव वन ऑफ आवर मेजर प्रोजेक्ट्स व्हिच इज डिजास्टर मैनेजमेंट. सो अगर दिल्ली में फ्लड्स आते हैं, इससे प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो वी कम फॉरवर्ड एंड वी हेल्प पीपल विद द फूड. And that is what happened right here also. When we saw that people were on hunger strike, people wanted food but were not able to get food and everything, we started with providing food. And not only that, we not only started with food, we are helping people in other ways also. We are providing them medical aid, relief aid, first aid kits, along with which there are a lot of students who are not able to get back to their homes after the protest. Like they came here, but in a day or two, they are not able to get back to their home. So we are going to provide them with transportation services also, whether it is through railways, airways, roadways, whatever way it is. We are going to help them. ओके. सो भूमि जी, सचखंड फाउंडेशन के कौन कंट्रीब्यूटर्स है? क्या आपको कुछ सरकारी इमदाद मिलती है या ये लोगों की डोनेशन से सब कुछ चलता है? Sir, it is clearly so we are an NGO affiliated with Niti Aayog, but whatever donations we get are from the people itself. Currently, also we have more than 1,000 plus calls on our helpline numbers. People calling us just asking, we want to donate this, we want to donate this, we want to donate money, can you please send your QR and everything. Along with which, there are a lot of people after seeing Sachkhand Foundations started creating Sachkhand Foundations fake accounts and started using their own QRs in our name. But what we believe in is that we want to make sure that people don't get scammed and everything. So through Instagram only, we started putting a lot of stories, a lot of reels, telling people that it's not us. We just have only one verified account, and that is it. And along with which, we have 5 to 6 helpline numbers. If you call on them, you will get the QR. You can donate there. Plus, there are a lot of people who wish to donate food or who wish to donate ORS, medical aid, first aid kit, anything. So what they do is they directly place the order. They put our numbers on the Zomato, Swiggy, Instamart, Zepto, Blinkit, wherever they can, and they just ask us to take the order. They place the order directly at the site. We take the order and then we take the order inside the location and then we distribute it further. Because there are a lot of people from Maharashtra, along with which I have received a lot of calls from Saudi Arabia, Australia. Outside India, there are a lot of people who want to help, but they are not able to help right now. So, Bhumiji, it's a protest going on. Why did Sachkhand Foundation think of going over there and serving them? So we did not go there with the motive of the protest. We went there to help out the people. And it's not कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से गए हैं, हम एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ से गए हैं. We have heard those teachings from gurus
एंड वी नो इट कि गुरु नानक देव जी ने ऐसा बोल रखा है, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमेशा सबकी हेल्प करनी है, एंड दैट इज द रीजन वी आर देयर, वी आर स्टैंडिंग देयर फॉर द पीपल, and it's not for one particular party, one particular religion. No, it's only and only for the people. प्रभु जी, सरकार तो ये एलेज कर रही है कि जी फॉरेन फंडिंग आ रही है इन प्रोटेस्टर्स को, तो क्योंकि आप भी जिस लेवल के ऊपर वहाँ पे जाके सेवा निभा रहे हैं, आप तो सेवा के मंतव्य से जा रहे हैं और पिछले 5 साल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो वो गवर्नमेंट की जो एलिगेशन है वो प्रूव गलत हो जाती है, क्योंकि जो रील्स भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सब जो हैं सेवा कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? So why I'm saying that people are standing there for other people. Like we went there yesterday. We went with fans. We went with food, first aid kits, and a lot of other things. People were standing there helping us out, bringing water, putting fans on us, and everything. So in simple words, I would say this only, that people are getting supplies, but they're not getting fundings. Getting fundings gets a different thing, that you get monetary donations, you get money from the people. It's not happening in that way. People are just putting orders, getting it there, and asking the delivery people to get it over at the location. Right. So, Bhumiji, again, it's a crisis. Right now, it's becoming a political crisis also. But what kind of things have you observed over there when you go over there? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा धरना लगा हो, तो उसके अंदर पूरी देश भर से नौजवान जो ख़ास तौर के ऊपर आके वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर. So, what kind of, if you could share some stories with us, because you have been on the ground, seen what kind of situation is over there. Anything that touched your heart? So the most important thing is that people have started making it. Some particular part of the society has started making it religious and political. Motive of the protest was something else. Education was the motive. People have started it taking in a different way, which is creating the chaos, which is taking government to ask the police to beat people and do all of this, which is exactly very very wrong. If the dialogue happens, if the government talks, everything can go right, everything can get sorted, but this is not happening in the exact same manner, and that is the reason lathi charge happened. That is the reason tear gas was out. So yesterday also when I was there were groups divided. So the exact main motive of why this protest was started is happening exactly at the main stage area where the stage was put up, where Sonam Wangchuk sir was uh, there. But there are a lot of 2 to 3 other groups that are divided, and they are just doing it on a political basis. They are putting slogans in such a way. So, leaving aside politics, when we talk about the humanitarian aspect of this protest, what have you observed over there? Because of late, what we have been seeing is in India, एक धर्म के दूसरे धर्म के बारे में बातें हम सुनते रहे हैं, और देश को डिवीज़न की बातें जो हैं धर्म के आधार के ऊपर काफ़ी पिछले समय में आगे आई हैं. पर आपने ऑन ग्राउंड क्या देखा जो हमें ये दिखाता है कि भारत में हर एक मज़हब के लोग रहते हैं, पर जब कोई समस्या आती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं? सो कुड यू शेयर सम स्टोरीज ऑफ दैट काइंड, बिकॉज फ्रॉम द रील्स व्हाट वी आर सीइंग इज अगेन पीपल ऑफ ऑल फेथ्स कमिंग फॉरवर्ड एंड सर्विंग ईच अदर. यस सर. सर इट्स नॉट मतलब जैसे आपने बताया कि रील्स वगैरह पे हमें ऐसे दिख रहा है कि सब डिवाइडेड है सब कुछ. इट्स नॉट दैट. वहां पर एवरी रिलीजन, everyone is treated equally. सब वहाँ खड़े हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. somebody needs water, कोई और भाग कर जा रहा है पानी लेकर आने के लिए. somebody is feeling dizzy, तो कोई और जा रहा है उनके लिए ORS लेकर आने के लिए, कुछ और लेकर आने के लिए. इट्स नॉट रिलीजन बेस्ड वहां पर. everyone is treating each other equally. Yesterday also we were standing there. Since we are a Sikh minority organization, a lot of people were coming there giving us food कि आप please ये भी distribute कर दो, आप please ये भी distribute कर दो. And our team was our team is also full of Hindu people, Muslim people, Sikh people. Everybody comes and joins the organization. So this is where your question gets answered. Ki there was nothing religion based. It was totally humanitarian. That people wished
and people wanted to come and help out the other people standing there in this heat. Right. That's excellent. And also, we have seen some videos of how at Gurudwara Bangla Sahib, the youngsters were given relief, and then at a masjid also, and other places also. So that's really commendable. But now it seems this is going to continue for long. Does Sachkhand Foundation or other organizations have enough funds to sustain all this? Sir, yesterday on 20th July also when we started with us people only putting out funds and everything. So if this continues, we are going to help out people doing seva, bringing them food, bringing them medical aid and everything. However it happens, we are going to donate money on our own, and then we are going to help out people. We are not going to back out. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, जैसे अब एक बात आती है कि अब यंगस्टर्स इकट्ठे हुए हैं और यंगस्टर्स की कुछ डिमांड्स हैं. एज अ यंगस्टर आप भी क्या महसूस करते हैं कि ये बातचीत करके सॉल्व हो सकती है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बातचीत के ज़रिए इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही? So yeah, that is one of the things that I'm not able to understand, because we also think that standing out and talking would be a better option for the government, because if government does not talk clearly, does not give a dialogue, the students who are currently sitting at the protest will continue to sit till the point they don't get an answer. So it's better to just talk it out, and government should just give a dialogue and get it sorted. It would be better, but it's again up to the government. We can't force anyone. जी. Of course, again, it's a political decision that has to be taken. Coming back to the humanitarian aspect, जैसे हमने पिछले समय में भी देखा कि दिल्ली में जब किसान आए थे तो लंगर सेवा बहुत चली, वहाँ पे गुरुद्वारों से जाता रहा खाना. क्या ये दोबारा से शुरू हो गया है, या आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ही अभी जो हैं ये फूड या और सहायता प्रोवाइड कर रही हैं? Sir, it is happening currently. So our organization is also one of the organization that is helping out in Gurdwaras. Because yesterday also we had a lot of calls. People wanted to donate milk, people wanted to donate food material like dal, rice, and everything. So we just asked them to put an order placed on Blinkit for Bangla Sahib Gurdwara, and whatever supplies we got, we just donated them further for the Langar Seva. So whatever is coming is either coming in, it's getting divided into two parts. It's either a full meal prepared that is directly coming from branded food deliveries or restaurants or something, or it's normal Blinkit or Zepto orders placing for the supplies or the raw materials like dal, rice, pulses, milk, sugar. All of this is coming in as raw materials, and then it is getting used further. Okay, wonderful. Bhumi Kapoor and the entire team of Sachkhand Foundation, congratulations for taking this initiative, and along with hundreds of other volunteers from different organizations who have come forward to serve. जाते जाते ये बताइए कि अगर किसी ने सपोर्ट करनी है तो आपका कोई फ़ोन नंबर जहाँ पे कॉल करके या आपको मैसेज भेज के कुछ इमदाद देनी हो या कुछ पूछना हो तो कहाँ पे संपर्क किया जा सकता है? Sir, Sachkhand Foundation का Instagram page is the right direction, and whatever numbers you want, they are also available there on the page. You can reach out to us through those numbers. Sachkhand Foundation has only one account, which is Sachkhand Foundation, and has a blue tick on it. So if anybody wants to reach out to us, can reach out through that page. And if anybody wishes to donate also, can donate through that page only. We have a pinned post with the name of Delhi Protest Relief Aid and have a QR on it. So if anybody wishes to donate, can donate through that. Thank you very much and best wishes. Thank you. Thank you so much, sir. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਭੂਮੀ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ. ਸੱਚਖੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ. ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸੱਚਖੰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 6046037555 ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।